दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, सो इसका जो टॉर्क आएगा, एक तो mg का टॉर्क, सो टॉर्क आ जाएगा mg। थोड़ा सा शायद डायग्राम कंफ्यूजिंग है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। mg is the midpoint of this rod, mg is the midpoint of the rod, और x is the total length जितनी ये अंदर है। So this will become L by 2 times cos theta, L by 2 cos theta, और perpendicular में mg into L by 2 times cos theta, this is the torque due to gravity in clockwise। इतना ही टॉर्क होना चाहिए buoyancy का, so buoyancy B is acting at the midpoint of this immersed portion of rod, that should be equal to buoyancy B into perpendicular distance from the axis, ये आएगी इसकी perpendicular distance, x is the total portion immersed, so उसकी half length हो गई x by 2, x by 2 cos theta is this, b into x by 2 cos theta। So इसमें थीटा थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम buoyancy is density of liquid into volume of immersed portion into g। Buoyancy is the weight of displaced liquid times x by 2, density of solid a into L। राइट, तो यहाँ से हमें ये पता पड़ जाएगा इसका कितना फ्रैक्शन अंदर है, हाउ मच फ्रैक्शन विल बी इमर्स इनसाइड, Q2 gone, A gone, it becomes rho L into x square is equal to rho S times L square। The portion, the length which is immersed inside is root of rho S by rho L times L। Center of buoyancy is the center of gravity of immersed portion, the portion which is inside। Correct? Okay. Next part is fluid dynamics. When liquid is in motion, then we don't apply these formulas. Pascal's law is applicable only when the liquid is in a state of rest. Now here, next part is fluid dynamics. When ideal fluid flow, ideal fluid के लिए there is no viscous force, so it is freely flowing. There are two type of flow: streamline flow and turbulent flow. In a streamline flow, the path of every fluid particle is fixed. Any fluid particle entering through a point in the pipe, all the particles going after that must follow the same path. So every fluid particle follows the same path as followed by its predecessors, the particle that has gone just before that. Right? Something like this. This is the पहले वाले एरिया A1, दूसरा वाले एरिया A2। A1 से जो अंदर जा रहा है that is V1, from A2 it is coming out V2। This is called streamline flow. In streamline flow, all the fluid particles move parallel to each other, no to collide. Streamline is also called as laminar flow. Second is turbulent flow. In the turbulent flow, all the fluid particles move randomly and they collide with each other as well as with the walls of the container. As a result, it collides and changes the direction. So there will be some small circular currents or circular where the fluid particle will be moving. So just like at the time of fire burning, initially the smoke nikalti hai, that is turbulent. So in turbulent, there are some small circular currents are formed called as vortex। इसमें difference क्या हुआ, थोड़ा सा water अंदर ही या थोड़ी सी fluid अंदर ही घूमती रहेगी, it will be in a rotational motion, it does not come out। और rotation motion क्यों है, क्योंकि जैसे ही wall से collide होगी, direction change, there will be another fluid particle colliding with it and they apply torque on each other। Turbulent flow के लिए we don't have any formula, but for a streamline flow we can write the equation of conservation of mass and conservation of energy because there is no loss of energy। How to decide between the two?
So इसका जो फॉर्मूला है वो है कुछ रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ Reynolds number is some constant which determines the type of flow. R is equal to rho V d upon eta. Rho is density, V is the speed, D is the diameter of the pipe, and eta is coefficient of viscosity. Because हम कहने के लिए कितना भी बोले ideal, but it's not possible to have zero viscosity liquid. That is impossible. For any liquid, it can be done. सर For a given liquid, yes boss. सर जो V1 से जो V2 चेंज हुआ है सर वो एरिया की वजह से हुआ है ना? वो एरिया की वजह से हुआ है, absolutely. जी सर. Got it? यस सर. तो इसमें क्या होगा, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो, देयर विल बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ, अच्छा हम कुछ बात कर रहे थे ये रो वीडी अपॉन ईटा की. ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. वैसे तो हम बोल रहे हैं आइडियल लिक्विड, बट आइडियल लिक्विड ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें विस्कोसिटी ना हो. दैट इज एन हाइपोथेटिकल असम्पशन. विस्कोसिटी कम हो जाती है हीट करने पे, विस्कोसिटी कम हो जाती है, एंड दैट विल बी बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ liquid it is. हीट करने पे coefficient of viscosity reduces and it becomes zero at a certain temperature called as, so increase करने पे, temperature increase करने पे viscosity कम होती जाती है. So that is another effect. अभी जब हम ये R के terms में देखते हैं, if Reynolds number is less than 1000 then it is streamline flow. If Reynolds number is greater than 2000 it is turbulent flow, and if Reynolds number is in between it will be mixed turbulent, streamline mixed with turbulence. So somewhere turbulence, somewhere streamline. Now, equation of continuity is based on equation of conservation of mass. जितना liquid इसमें अंदर जा रहा है एक side से, the same amount of liquid will be going from the other side. So since density is same, so rate of flow of mass, which means the rate of flow of volume, A1 V1 is equal to A2 V2. Yeah, A1 V1 is equal to A2 V2. अभी ये जो वॉल्यूम रेट है dV by dt is the rate of flow of volume. The rate of flow of volume is constant for any streamline flow of a liquid. Ideal liquid तो नहीं, but हाँ किसी भी liquid के लिए it is always true. It's not necessary for an ideal liquid, but the flow has to be maintained streamline. The liquid should not rotate and should not come back. So A into V, जितना ज़्यादा capital V is volume and small v is speed. A into V is constant. So area ज़्यादा होगा तो speed कम होगी, और area कम करेंगे तो flow में speed बढ़ जाएगी. A into V is constant, which is the property of, जैसे right. So question based किस पे कैसे आते हैं? Suppose किसी water tap से which is having a radius of let's say 2 centimeter, 1 centimeter, 10 meter below, or maybe 1 meter below, 10 meter ज़्यादा हो गया, 1 meter below. As it goes down the speed increases because of the gravity, and as speed increases so its shape will be tapered. If it is R1 radius at the top, now radius will be decreasing because the speed with which the fluid particle moves increases. So A1 V1 is equal to A2 V2, and where V1 and V2 will be related with pi R1 square V1 is equal to pi R2 square V2. V2 square is equal to V1 square plus 2GH. So we can substitute V2 in terms of V1 and then we can find the relation. Next concept is
Next concept is equation of Bernoulli's theorem. सर Yes. सर इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है सर, उसकी वैल्यू सर आपने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर सर वो तो कभी ना कभी तो जीरो हो ही जाएगा ना, जीरो नहीं बहुत नहीं, क्लोज। वो कभी ना कभी जीरो तो हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द प्रैक्टिकल, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सेंस। क्या वो वेलोसिटी, विस्कोसिटी हमेशा जीरो नहीं हो पाएगी। क्यों कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी प्रैक्टिकल टेम्परेचर पे? क्योंकि बॉन्ड्स आर ऑलवेज देयर। जैसे वाटर है तो वाटर के बीच में बॉन्ड्स होंगे, और उस बॉन्ड्स की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लेयर को मूव करने नहीं देती। दैट इज दी विस्कोसिटी। सो इट रिड्यूसेस क्योंकि बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बट इट विल नॉट बी कंप्लीटली जीरो। सो किसी भी प्रैक्टिकल लिक्विड के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव जीरो विस्कोसिटी, जो हमने आइडियल की कंडीशन ली हुई है। करेक्ट? यस सर। हाँ। सेकंड आते हैं, ये दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ conservation of energy. So that's called Bernoulli's theorem. In the streamline flow, there is no word ideal here to be used. हम यहाँ पे ideal की बात नहीं कर रहे क्योंकि ideal में तो viscosity नहीं होती. Bernoulli's principle says in the streamline flow of any liquid, the sum of pressure plus kinetic energy plus प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती है, पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। सो पहले सरफेस पे जहां से अंदर जा रहा है P1, एंड ऑन द सेकंड सरफेस वेयर इट इज कमिंग आउट इज अगेंस्ट द प्रेशर P2. V1 with it goes inside, V2 with which it comes outside, H1 and H2. So P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. But if suppose it is a horizontal pipe, for any horizontal pipe, the sum of pressure for horizontal pipe when H is same on both the side, P plus half rho V square is constant. So यहाँ पर थोड़ी सी कहानी different है. Why? Because it is sum of pressure plus kinetic energy. So अगर किसी भी point पे area ज्यादा है out of these two positions A1 and A2, अगर बोलेंगे pressure ज्यादा कहाँ पे, तो शायद आप आंसर दोगे A1 पे, because area कम है and pressure is force upon area. But here the liquid is flowing, so liquid is in motion. We will not apply those static formulas. एरिया जहां पे कम है वहां पे स्पीड ज्यादा होगी. A1 is less than A2, which means V1 is greater than V2. और V1 अगर बड़ा हो गया, so kinetic energy वाला portion बड़ा होगा, kinetic energy is greater, so pressure will be less. So that means P1 will be less than P2. So in this pipe having a streamline flow, pressure at a smaller cross section is smaller. Not that formula P is equal to F by A. That formula is applicable only when liquid is in a state of rest. Clear? यस सर। Okay, so there are many numerical application of this concept also in the aircraft lift called as dynamic lift. So when aircraft take off, it always first has to run, and so that there will be some speed difference caused. Dynamic lift is for the airplane wings. So this is the cross section area of airplane wings. नीचे की तरफ थोड़े flaps होते हैं जिनको open करके हम speed कम कर सकते हैं. We can reduce the speed
right? Yes, sir. Speed of the liquid, air particle which comes through the jet engine is divided into two part. एक ऊपर से आएगा, that is V1, दूसरा नीचे से आएगा. इसके फ्लैप को ओपन करके हम नीचे की स्पीड और कम करते जाते हैं. V2 is less, so P2 will be high. V2 is less than V1. नीचे फ्रिक्शन भी होता है. नीचे की तरफ से जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, या इनफैक्ट ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ड्रॉप हो जाएगा. And as a result, there will be an upward pressure force. There will be an upward pressure force, and that causes the overall lifting force. So lifting force is due to the pressure difference. Pressure difference is P2 minus P1 into A. Pressure difference P2 minus P1 कैसे निकालेंगे? By applying the equation of Bernoulli's theorem. So if you are using the Bernoulli's theorem, P2 minus P1 can be written by P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Here P1, P2 is the pressure above and below. P2 minus P1 is half rho V1 square minus V2 square. Half rho V1 square minus V2 square. V1 is the speed above multiplied by area. So pressure difference आ गया density के terms में. We measure the speed above and speed below, and accordingly we measure that how much is the lifting force. It is now safe to take off or not. So lifting force has to be greater than the total weight of the aircraft. सर Yes बेटा. सर जो V2 है सर वो इसलिए कम हो जाता है, मतलब क्योंकि नीचे फ्रिक्शन वो सब आ जाता है इसलिए? हाँ, नीचे फ्रिक्शन है और प्लस हम यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं फ्लैप, तो वो बार बार उससे आता है, कोलाइड करके रुक जाता है. इट प्रोवाइड्स मोर. एंड सर नीचे का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है फिर? हाँ बेटा, सर नीचे का प्रेशर फिर कैसे इंक्रीज हो जाता है? नीचे का प्रेशर की स्पीड कम हो गई ना, ये कांस्टेंट है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. नीचे की स्पीड कम हुई तो नीचे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो प्रेशर बढ़ जाता है. ओके सर. इनफैक्ट नीचे का प्रेशर बढ़ता नहीं है, प्रैक्टिकल क्या है, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है. जी सर. राइट. सेकेंड इज वेंचुरीमीटर, और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे हार्ट अटैक आता है बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट. इट बिकम नैरो होने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा. स्पिनिंग ऑफ बॉल एंड स्विंग ऑफ बॉल. ठीक है. और तीसरा नेक्स्ट इज मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट. तो ये चेंज इन द पाथ, स्विंग बॉल की स्विंग या स्पिन, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नस इफेक्ट. नेक्स्ट इज Venturimeter. What is Venturimeter? It is a device to measure the rate of flow of ideal liquid. It is rate of flow of liquid through a pipe in a streamline. It is used to measure the rate of flow. रेट का मतलब हो गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. रेट का मतलब हुआ वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. क्योंकि हर जगह से कांस्टेंट ही होगा अकॉर्डिंग टू the equation of continuity. The rate of flow of liquid means volume flowing per unit time is always same.
right? The apparatus arrangement is, it is a variable cross section. It is a variable cross section pipe जिसको हम फिट कर देते हैं to that portion जहाँ पे हमें calculate करना हो, and then there is some vertical pipe attached. So the liquid that has to be measured, the liquid for which the rate has to be measured is connected here, and the pipe is and it is allowed to reach the streamline flow. पहले वाले पे कितना अंदर जा रहा है, V1 A1 V1 is equal to A2 V2. पहले वाले पे प्रेशर P1, दूसरे वाले पे प्रेशर P2. कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, P1, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम प्रेशर ज्यादा. सो ऊपर जो ये पाइप लगी है वर्टिकल, इसमें लिक्विड ज्यादा राइज करेगा. वी मेजर दिस हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास H1. दूसरे वाले पे एरिया छोटा है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, इसलिए इसकी प्रेशर, इस पे हाइट कम राइज करेगा, दैट इज H2. Between the two there is a change in the position of the liquid height, so that is H. Now when we apply the Bernoulli's theorem and equation of quantity, A1 V1 is A2 V2, that's first equation. Second equation is P1 plus half rho V1 square is P2 plus half rho V2 square. P1 minus P2, that's the pressure difference which we can measure from, is half rho V2 square minus V1 square. A1 V1 is equal to A2 V2, so we can find from here V1 in terms of V2. V1 is A2 by A1 times V2. Substitute in equation number 1. P1 minus P2 हम measure कर लेंगे from the P1 minus P2 we can measure from the Bernoulli theorem. दोनों के बीच का जो height का difference है, P1 is rho g H1 and P2 is rho g H2. So this pressure difference will be given by the difference in the height of liquid. So substitute P1 minus P2 as rho g H and substitute V1 as A2 by A1 times V2 whole square. Rho gone. GH is equal to V2 square by 2 into 1 minus A2 by A1 whole square. V2 will be the root of 2GH divided by 1 minus A2 by A1 whole square. This is the formula for speed of the liquid coming from the small cross section. Rate of flow निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Rate of flow will be dV by dt, and dV by dt is A2 into V2. सर Yes. सर एक चीज कंफर्म करनी थी. सबसे पहले जो हमने वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा था सर, उसमें भी लिक्विड मतलब उसकी आर की वैल्यू 1000 से कम होनी चाहिए ना? इस सारे के सारे स्ट्रीम लाइन है, सब में 1000 से कम ही होनी चाहिए. जी सर. So we'll multiply with A2 and that gives the total rate of flow of liquid, A2 into root 2 GH divided by 1 minus A2 by A1 square. अगर दूसरा वाला एरिया बहुत ही छोटा है, very 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 small, then only we can change A2 by A1 square is negligible as compared to 1. Okay, fine. Next is the efflux. Efflux is when the liquid comes on its own due to the pressure difference. So this is a container filled with liquid.
and there is a small hole at a depth h from the surface. Capital H is the liquid height, and this hole is very small, a pinhole of area small a. And while the container has total area of container is capital A, but A is very small than A. This hole is capital A. Due to this hole, due to the pressure, the liquid start coming out, and this is called efflux. The speed of efflux we have to find, and the distance where it strikes, that we have to find. So क्या करेंगे हम? Again we have one equation from equation of continuity. AV is equal to capital AV1, equation of continuity, and the second equation is equation of Bernoulli's theorem. So we have to apply Bernoulli's theorem between this pinhole and the total area of the cross section. P ATM plus half rho V1 square or rho G H the potential energy by taking the zero potential energy at the hole level. This will be equal to P ATM plus half rho into V square. P ATM gone. अगेन ये कुछ पहले जैसे ही वेंचुरीमीटर जैसी इक्वेशन बन गई, हाफ रो कॉमन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एंड जस्ट अ सेकंड. Yes, so speed of efflux comes out then root 2gh. Root 2gh is root 2gh will be, so the speed of liquid with which it comes out depends only upon the height of the liquid above that hole. It does not depend upon total water amount, and does not depend upon the size of the hole, size of container. It depends only upon the height of free surface, right? सर हाँ बेटा, सर वहाँ राइट साइड में सर रो जी एच आपने क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा राइट साइड में? रो जी एच क्यों नहीं लिखा? 2gh क्यों नहीं लिखा? लिखा तो है. नहीं सर, वो नहीं सर, जो आपने ए बी इक्वल्स टू ए बी वन इक्वेशन वन के बाद में जो आपने लिखा है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. हाँ तो सर वही इक्वेशन टू में सर आपने राइट साइड में रो जी एच क्यों नहीं लिखा?
ये तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे 0 ले लिया एट दी होल लेवल। ओके, अच्छा ठीक है। उस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, उससे h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 gh। प्रेशर Yes, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट समेशन इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ रेफरेंस। तो सर मैं वही हाइट ले ली जहाँ पर वो होल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ से भी ग्राउंड से भी लोगे तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा h1 और दूसरी तरफ कैपिटल H, so ये h तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। so we always take gravitational potential energy, that is the advantage, we can take zero potential energy anywhere as per the convenience। so if flux speed आ गई is equal to root 2 gh, the speed with which liquid is coming out। got it? यस सर। सेकंड हमें कैलकुलेट करना था रेंज। तो रेंज के लिए नाउ विल कंसीडर दिस टू बी लाइक अ फ्री फॉल ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला होता है रूट 2 h by g, h becomes capital H minus small h, capital H minus small h is the height through which this liquid falls। range is velocity into time, v into t, v is root 2 gh into 2 capital H minus h by g, so that becomes 2 root h into capital H minus small h. This is the formula for range, the distance at which the liquid strikes। करेक्ट। नाउ फॉर द मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या करते हैं, डी आर बाई डी एच मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। जहां पर आर मैक्सिमम होगा वहीं पे आर स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। सो डी बाई डी एच ऑफ आर स्क्वायर शुड बी 0 एंड विच गिव्स small h should be capital H by 2। so hole should be at the center, so that the liquid is at the maximum distance from the container। रेंज कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए, दैट मैक्सिमम रेंज इज r max will be equal to 2, the small h is capital H by 2, capital H by 2, that will be equal to h। the maximum range is equal to h। so the maximum distance up to which a liquid can go is equal to the height of free surface of the liquid। okay fine। so this is a flux speed normal वाला जो स्कूल में आता है। कंप्यूटर लेवल पे it might be a mixture of liquid। so suppose there are different liquids। ऊपर रो डेंसिटी का एक लिक्विड है, डेंसिटी रो हाइट h। बीच में 2 रो डेंसिटी का एक लिक्विड है, 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है which also has height h। और तीसरा आ गया 3 रो for which also it is height h। now as a result अगर हमने सपोज बॉटम में कुछ होल कर दिया, there is a small hole at the bottom, find the speed with which liquid comes out। find the speed with which liquid comes out from the hole। क्या करेंगे इक्वेशन, पी एटीएम ऊपर
यहाँ पे भी PATM और इसकी स्पीड अगेन वी कैन टेक दिस एज नेग्लिजिबल 0, पहले स्टेप में ले सकते हैं हम, इट इज 0. PATM प्लस पहले वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, ऊपर वाले सरफेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो rho GH प्लस 2 rho GH प्लस 3 rho GH. हर समझ में आ गया ना ये? यस अभी सर, हमने 0 कहाँ पे लिया है? बॉटम पे. दिस इज बॉटम 0 पे। पोटेंशियल एनर्जी. अब जब इसके लिए जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो प्रेशर तो बाहर भी PATM में जिसका ये हवा में पकड़ के रखा है, मतलब किसी सरफेस पे रखा नहीं है, ऐसे हवा में उठाया तभी पानी नीचे से बाहर निकलेगा. सो दिस इज PATM. और अब जो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है दैट लिक्विड डेंसिटी इज 3 rho. सो हम लिखेंगे हाफ इंटू 3 rho इंटू V स्क्वायर. Solve this for the speed. V will be the speed with which liquid is coming out. समझ गए? तो ऐसे हम इसको अलग अलग लिक्विड के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है फाइंड द टाइम टेकन फॉर कंटेनर टू गेट एम्प्टी. सपोज किसी कंटेनर में हमने नीचे से होल किया, स्मॉल होल, एंड फाइंड द टाइम इन विच द लिक्विड कम्स आउट. तो 200 GH। नहीं बेटा, टाइम बताना है. टाइम नहीं इन सर, विच पहले द वाले का। कंटेनर. अच्छा, पहले वाले का. ओके, ठीक है. PATM गॉन. ये हो गया कितना? 3 प्लस 3 6. 6 into 2 12. So 12 by 3 4. 2 root GH, right? Root 4 GH या 2 root GH? जी सर। Time in which the container gets empty. इसके लिए because as the height goes down, the speed of efflux will be reducing, so we have to apply the integration. किसी टाइम y पे, किसी टाइम t पे, when the height is y, then the speed with which it comes out is root 2 gy. So capital V is volume. Volume को हम लिख लेंगे टाइम t. Volume is area into height. So d by dt of capital A into y, and that will be A times root 2 gy. Now to integrate this, we have to keep y on the side of dy. It becomes dy divided by root y is equal to root 2g into A times dt. All these term is constant, so integrate from 0 to h y to the power minus half dy. This whole term is constant. Dt integration will be from 0 to t. Y to the power plus half divided by half, limit from 0 to h is equal to kt. So k आ जाएगा proportional to k into t is equal to 2 times root h. Time taken to get
to completely empty is 2 by k times root h, where k is this whole term. So इसका मतलब क्या हुआ? Time taken is proportional to root of h. अगर double किसी में liquid का height है, height is doubled, then time taken will be root 2 times. Time taken to empty a container is root 2 times the height of the liquid. अब बेटा सर ये जो टाइम है, ये वाला जो क्वेश्चन है सर, ये तभी मतलब यूज कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन वाला, जब एक ही टाइप का लिक्विड प्रेजेंट हो कंटेनर में। नहीं, ये तो एक ही तरह का लिक्विड है. दिस इज वन टाइप ऑफ लिक्विड ओनली, बट ये लिक्विड जैसे से नीचे जा रहा है वैसे से हाइट कम हो रही है. हाइट कम हो रही है तो नहीं नहीं सर, वो लिक्विड. नहीं सर, मतलब जैसे अगर और भी अलग अलग टाइप के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं जिनकी डेंसिटी अलग होती है, तो फिर ये यूज नहीं तो कर हम सकते उसको थे ना। अलग अलग हाइट के लिए लिक्विड करेंगे. अच्छा, ये इंटीग्रेट सेपरेट. पहले v निकालेंगे, वो केवल 0 से s तक के लिए होगा. जब 0 वाला खत्म हो गया तो v2 निकालेंगे, फॉर विच दिस सेकंड लिक्विड कम्स आउट. ओके जी सर। समझ गए? हाँ सर। सो 0 टू h और h टू 2h और 2h टू 3h हम अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर टाइम तीनों का अलग निकालेंगे, बिकॉज स्पीड विल चेंज. So ये आ गया फ्लक्स स्पीड. नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन. Viscosity is the opposition with which the liquid layer opposes the other layer to flow. So it's kind of friction between the liquid layers. So two layers which are in contact because of their intermolecular bond. The force with which तो ऊपर लिक्विड नीचे वाले लिक्विड को रोकेगी, and that's why there will be a decrease in velocity. The upper layer will be flowing with the greater speed than the lower. दोनों के बीच की perpendicular distance है delta x. The viscous force is given as minus eta a delta v by delta x. Minus delta v by delta x is also called as velocity gradient. So minus sign is here because it is always opposite to the eta is coefficient of viscosity. It is opposite to the velocity gradient. Velocity gradient means velocity is decreasing. As we go, delta x is perpendicular distance between them. This is the viscous force. So eta जो है, eta की definition क्या होती है? It is kind of shear stress because A is the area and delta v by delta x is rate of change of strain. Delta v by delta x is rate of change of strain. राइट. सेकेंड विस्कोसिटी. किसी भी केस के लिए हमें ऐसे इंटीग्रल के निकालना पड़ेगा, बट इन दिस केस द लिक्विड लेयर इज फ्लोइंग. डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी निकाल लेते हैं, v1 माइनस v2 अपॉन डी. सपोज इफ यू कंसीडर द रिवर फ्लो, तो रिवर की टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है एंड ग्राउंड पे जाते जाते जीरो, द पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट. सो v2 0 and d is the depth. So velocity gradient for a river flow, we can write this as v by d. Delta v by delta x is v by d.
right? So next is Stokes law. Stokes law is applicable only for spherical body. When there is a spherical body moving a sphere moving in a viscous liquid, this is Stokes law. Liquid is in a state of rest and a spherical body is moving. Liquid is not moving. That spherical body of radius r is moving with velocity v. As a result, there is a viscous force. As a result, there is a viscous force acting opposite to the velocity 6 pi eta r. So this is an experimental law. This is why it is law. It is experimentally derived that for any spherical body, when it moves inside a viscous liquid, the force acting on it is proportional to the velocity, proportional to the radius. F is equal to minus 6 minus L because it is always opposite to the velocity. This is the extra force that is acting because of the viscosity. Extra means there will be one mg acting downwards, there will be one coefficient, there will be one buoyancy acting at the upward direction. Along with the two, there will be a force. So if suppose initially the body is just dropped, initial velocity is 0, so it has only mg and only buoyancy, but mg is greater than buoyancy, so it starts sinking inside. But since mg is greater, therefore there will be an acceleration. Because of that acceleration, it start going into the liquid. As a result, velocity will increase due to the acceleration. It was the power cut. mg is equal to f plus buoyancy. So mg कितना हुआ? Rho viscous force will be equal to mg minus buoyancy. Viscous force is 6 pi eta r into vt. T stands for terminal velocity, 4 pi by 3 r cube g minus rho l into 4 pi by 3 r cube g. G gone, r by pi gone. Formula आ जाता है 2 by 9 eta r square rho s minus rho l times g. Right, so that's the terminal velocity. Next concept is terminal velocity का ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा? इसका मतलब initially तो velocity 0 थी because of the acceleration initially. Increased velocity increases, but with time that increase rate of increase decreases, and after a long time that velocity becomes constant velocity, terminal velocity. If suppose a liquid body is dropped from h height above from the liquid, तो पहले इसकी velocity बढ़ती जाएगी, and then it will be decrease, and it will be at the terminal velocity.
वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही होनी है फॉर द गिवन लिक्विड. फॉर द गिवन लिक्विड इनिशियली ये टाइम के साथ बढ़ती जा रही है. बाय बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस gt. So velocity is increasing with time. Velocity is increasing with time and it will become constant after a certain time. Okay, very good. So this is the terminal velocity concept. Next is surface tension. All the liquids surfaces have some unbalanced force, and the reason of that unbalanced force is क्योंकि उसमें केवल एक साइड पर ही लिक्विड है, on the other side there is air. So liquid molecule present on the surface has unbalanced force, and that unbalanced force causes a extra energy called as surface energy. Any molecule which is completely inside is direction, and it is only from one direction, and as a result the net force is not zero. This unbalanced force causes the extra energy. Extra energy की वजह से ही this surface molecule starts leaving the surface, called as evaporation. For that, heating is not required. Even at 0 degrees Celsius, there will be evaporation taking place. Liquid particles at the surface have extra energy. Due to that energy, the surface molecule have tendency to release, evaporate from the surface, and as a result, the surface energy will be reduced, but new particle will come. So as a result, this evaporation will be continued till the whole liquid is gone. So what nature does, the liquid molecule try to minimize this energy, and the way of minimizing this energy is minimizing the total number of molecule present. Total number of molecule will be reduced if area is reduced. So all the liquid surfaces have one tendency to minimize its surface area. Minimizing the surface area by changing the shape from rectangular to spherical. So from cuboidal, all liquid surfaces have tendency to become spherical because only then it has minimum surface area. Minimum surface area means minimum number of molecule. Minimum number of molecule means minimum number of energy. So area तो इसका in decrease हो गया. Area is decreased, but length wise it has increased now. The length of the interface, it was straight, and now it become a curved wire, which is obviously greater, little longer. As a result, now there will be a spring-like force. जैसे spring को stretch करते हैं, there is a force on the spring. There will be a spring-like force produced, and the film and this surface behave like the surface of film behave like stretched film having a surface tension. तो इसके ऊपर जो surface tension होता है, that surface tension is force acting per unit length. ओवरऑल अगर हम लिक्विड का सरफेस लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज जैसे किसी वायर में स्ट्रिंग में होता है, the tension will be acting at both the end, they will cancel out each other. So as a result, the net force will be zero, but it will be stretched from both the sides, and the liquid surfaces behave like a stretched film. So all the small insect or any needle or leaf, when it falls on the water surface, it floats not because of the buoyancy, it floats because of the force due to surface tension. So जैसे किसी भी liquid के अंदर हम liquid के surface पे gently कुछ चीज रखते हैं, like a needle is placed, so because of that needle वहां पर liquid का shape थोड़ा change हो जाता है, slightly the surface will be altered, and due to which on this cross section there will be a force acting. Now force due to surface tension is surface tension into length. Length जहाँ पर वो liquid और solid और air आपस में touch कर रहे होंगे. So if length is L, on this side force acting will be T into L, on the left side also, because there will be two different molecules. एक molecule जो liquid के इधर touch हो रहे हैं, and the molecule which is touching from the other side will be different molecule, not the same. अभी इसमें ये liquid के अंदर नहीं गया, which means it has not displaced any liquid. When it has not displaced any liquid, there is no buoyancy. The needle is gently placed on the liquid surface, and it is floating because of surface tension force balancing the weight. 2 TL cos theta will be equal to mg.
if this needle is floating. So force due to surface tension will be surface tension into length, but ये हमेशा लगेगा किधर? It is always along the tangent or along the surface. It will try to oppose the change or elongation. जैसे हम किसी फिल्म को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, let's say on any wire frame there is a film, soap film, और soap film को हम इस बाहर की तरफ pull करते हैं by using this wire frame. So force will be surface tension into length. ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी. So F will be 2TL. 2TL is the surface tension, force due to surface tension. TL ऊपर से और TL नीचे से. This is the minimum force required to pull this rod. Another formula for surface tension is because this is against the internal force. Internal force के against work कर रहे हैं हम, तो उसकी energy change होगी. Energy change होगी मतलब there will be some change in energy, and change in energy will make it stabilize. So surface tension will be delta U by delta A. This is the another formula. Change in surface energy divided by change in surface area. Surface energy will be equal to surface tension into change in area, and this is the minimum work done which has to be done if you want to change the surface area of any liquid surface. तो जैसे सपोज किसी एक ड्रॉप को, छोटी ड्रॉप को हम बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या बबल को बड़े बबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन ऑल दैट केसेस वी हैव टू डू दी वर्क. स्मॉल ड्रॉप को बिग ड्रॉप में बनाना है बाय ब्लोइंग एयर और समथिंग. ड्रॉप में केवल एक इंटरफेस होता है, अंदर लिक्विड और बाहर एयर. स्मॉल टू बिग. So initial area is 4 pi r1 square and final area is 4 pi r2 square. R1, R2, change in energy will be surface tension into 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square. This is the minimum work done required to be done. अगर ये ड्रॉप हो, अगर ये बबल हो ड्रॉप की जगह पे, so बबल में अंदर भी एयर होगी और बाहर भी एयर होगी. Small bubble to big bubble. Inside is also air, outside is also air. So as a result, there will be two interfaces, area increasing simultaneously. अंदर का भी 4 pi r1 square, बाहर का भी 4 pi r1 square. So here change in energy will be surface tension into change in area, that become 8 pi r2 square minus 8 pi r1 square, because air blow करने पे अंदर भी air है और बाहर भी air है. As a result, it will be increasing. A big drop to n smaller drops. एक बड़ी ड्रॉप को अगर हमें ब्लो करके, एयर ब्लो करके छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, तो we have to do some work, and that work will be done in increasing the area, because area बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी. एक बड़ी ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल R and smaller drop each of radius small r. So one big drop has radius capital R and small drops each of radius small r. What we do is change in energy will be surface tension into increase in area, n into 4 pi r square minus 4 pi times capital R square, और बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन हम इस पर रिलेशन निकालेंगे. जितना एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है उतना ही n छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम होना चाहिए.
So we can substitute. और इसमें क्या होगा? This change in energy will be caused by the internal energy कि हम बाहर से mechanical force लगा के इसको move नहीं कर रहे हैं. This is because of internal energy work, the internal force work done. When internal force does work, potential energy decreases. यहाँ पे potential energy कौन सी है? Internal energy, which is directly proportional to temperature. As a result, the temperature decreases and the water drops cool down. So small drops, when you sprinkle a water, it feels relatively cool. Next concept is, next effect is the shape of the liquid surface that is represented by the angle of contact. So in any solid, when a liquid is placed, there are two major forces. लगते तो three हैं, but there are two major forces. One is applied by the molecule by the solid. Liquid molecule पे solid की वजह से called as adhesive. Another is the liquid molecule by the liquid called cohesive. So as a result, अगर adhesive forces ज़्यादा होंगे तो resultant बाहर की तरफ आएगा. Resultant बाहर की तरफ आएगा, so liquid has tendency to stick or to rise on the glass. So as a result, the liquid has tendency to wet the glass. The angle of contact is defined as angle between the tangent to the liquid and solid inside. This is the convex surface, concave surface, or concave meniscus. इसके लिए angle of contact is always less than 90. Second possibility is that coercive forces is very, very greater than the adhesive forces. So as a result, the resultant will come inside. If resultant will come inside, then liquid will move away from the solid surface and it will be repelled. It does not stick. Yeah, so in this case, it is a convex meniscus or convex surface. So convex कब बनेगा? जब coercive forces बहुत strong होंगे adhesive forces से. And when coercive forces is, when adhesive forces are very strong, it will stick to the glass. So alpha less than 90 when the liquid wets the surface, alpha greater than 90 when liquid does not stick to the solid, and adhesive forces are very less as compared to coercive forces. So example like mercury in glass, and here it is water in glass. So the shape of the liquid surface is always represented in terms of angle of contact. Alpha is called angle of contact.
for pure water or distilled water in the glass, it is alpha is 0. Alpha is 0 for pure water. So pure water के लिए it will be a perfect hemispherical kind of thing. Here alpha is 0 degree. So next is another effect of liquid is. Chalo, ठीक है. I think one topic is left, that is the capillary rise, that I'll take tomorrow. Okay, so tomorrow I'll take that, and then we will discuss the questions from some of the questions from the surface tension part from the recent exam. And then we do thermodynamics, heat and thermal properties and thermodynamics. Right. So, चलो क्या now the maths class. Yes बेटा बोलो हर्ष. सर वाटर में फोर्स बहुत ज्यादा होता है क्या पार्टिकल्स के बीच में? Hydrogen bonding हाँ सर वो तो is the strongest of all van der Waals forces. यस सर इंटरेस्ट बॉन्ड. But यहाँ पे तो ये liquid solid पे चिपक रहा है ना, तो because of the dipole nature, it has more force by the solid. तो सर इसीलिए इसका मतलब अल्फा 0 है. अल्फा 0 इसलिए क्योंकि इसके सॉलिड के साथ टेंडेंसी ज्यादा है. सॉलिड के साथ स्टिक करने की टेंडेंसी ज्यादा है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम इज ग्रेटर. यस सर. बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड rather than liquid क्योंकि लिक्विड में वाटर के बीच में केवल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक अट्रैक्शन फोर्स. Though it is the strongest of all van der Waals forces, but it is weaker as compared to the force between the solid ions and dipole. ठीक है, so हम कंटिन्यू करेंगे कल the capillary rise and fall and the excess pressure inside the water drop and liquids. ठीक है, आप साथ में क्वेश्चन करते रहना सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के, एक्स्ट्रा कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है. रिवाइज योर फॉर्मूला शीट and solve last year's paper as a test paper within the given time frame. यस सर. Thank you. थैंक यू सर.